इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप सकते हैं इंडिया। तो आइए आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। इसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड का इस वक्त आप संबोधन सुन रहे हैं। आइए से चलते हैं। अमृत निकलेगा जो अवश्य ही हमारे देश और संसदीय व्यवस्था को अमृत काल में नई ऊर्जा देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स hold august offices. In this capacity, we are not stakeholders in politics. Primary concern of presiding officers is optimization of the contribution of elected representatives in parliament and legislature for welfare of the people. People in the executive, legislature, and holding senior political positions. I am very particular about it. Those who hold high offices, they must take care that high constitutional offices are kept away from their political stance. We have noticed recently some serious observations that are transgressions. I would appeal to them to accord highest propriety to constitutional offices and not drag them into political arena. India is privileged to be heading G20 at a critical time. It is an opportunity to showcase capabilities of Bharat to the world. With such a sizable nation, the mother of democracy, such diversity and such potential, India has the chance to introduce itself to the world and demonstrate its power and prowess. This is going to be a milestone development. The conference is being held in the context of rising global profile of India. Friends, you are aware, our rise is unimaginable. The respect which India and Indians have in the world was never earlier to this extent. Today, we are in Amrit Kal of our independence, on way to, and this is very critical for this conference in particular, laying firm foundations of what Bharat will be in 2047 when we celebrate centenary of our independence. Honorable presiding officers, we need to make an effort that on some issues we rise above partisan stance. We must take pride in being Indians and be proud of our historic achievements. These achievements are due to collective effort and genius of our people, coupled with governmental initiatives both at the state and central level and affirmative policies. This development that has taken India to this level is a collective effort. Bharat is on the rise as never before. The world has acclaimed our COVID handling. Some of the recent milestones make us hold our head very high and in pride. In October 2022, India surpassed the United Kingdom. They were our rulers for long. We surpassed them to become the fifth largest global economy in the world. A great milestone and commendable achievement. By turn of the decade, we have no doubt, we will be the third largest global economy. And friends, most recent development, we all talked when Suzuki car came to India, when we had its Maruti version. But very recently you would have seen
India overtook Japan in auto sales in 2022, moving to the third place for the first time in the world. An achievement we should all be proud of, a tribute to the skill and genius of Indian mind. Friends, we must believe in our achievements because our human genius is the basis of it. India has passed China. We have overtaken China to add most number of new unicorns startups valued at 1 billion or more. Startups and unicorns of fiscal dimension or 1 billion, we have overtaken China. This is an achievement as a result of perspiration, talent, commitment, direction of our people. Our rich human resource, skilled workforce, and affirmative government policies guided by the principle of more governance and less government contributed to a great growth trajectory that is continually upward. Bharat today is a favored destination of investment, innovation, and opportunities in the post-pandemic world. The country has shown resilience and Atmanirbharta in the wake of COVID. The world is surprised that we provided 230 crore vaccine doses largely free. Our vaccination certificates are digitally available. Let me inform this august House, even the most developed countries have not been able to make available vaccination certificates digitally available. We have done it. This is a huge achievement. And we believe in our age-old ethos, our civilizational mechanism. India delivered during COVID while handling the domestic situation 16.29 crore doses of vaccines to 96 countries. What an achievement. We were tackling the problems of our own people and we were hand-holding those who were in need of it. And of this, friends, 1.43 crores were gifted. Through our vaccine Maitri mission, we have shown that we are a responsible partner in global welfare and growth. It is with this spirit, it is in this background and global cooperation, the largest democracy assumes the leadership of G20. Inspired and motivated, and what the world has ever respected, our age-old ethos, Vasudev Kutumbakam, we have given new mantra for sustainable development and inclusive prosperity of the world, and that was indicated by the Honorable Prime Minister. And look at the theme of it. One earth, one family, one future. We have followed it for thousands of years. We have given this mantra to the world, and 2023 will be a year fructifying it for global welfare. Friends, a sense of democracy, what does it mean? Democracy means prevalence, supremacy of the mandate of the people and securing their welfare. ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत विश्व में लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है. हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव है. इस परिप्रेक्ष्य में हमारी अधिक जिम्मेवारी है कि प्रजातांत्रिक मूल मुद्दों को इसकी मौलिकता को हम हर तरीके से प्रिजर्व करें. करंट सिनेरियो in parliament and legislatures is indeed a cause of concern. आपसे ज्यादा कौन जानता है कि विधान मंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो वातावरण दर्शित होता है
उसका जनता क्या आकलन करती है। यह समय है कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढें। The disillusionment of the people and their disgust at lack of decorum in parliament and legislatures could not be more. लोकतंत्र के इन मंदिरों की विषम दशा से हम सब भली भांति परिचित हैं। मित्रों, समय आ गया है कि इस निराशाजनक स्थिति का उचित समाधान अविलंब निकाला जाए। आप सब इस समाधान के सबसे सशक्त माध्यम हैं। संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाओं और व्यवहार पर जनता में व्यापक रोष है, इसका निदान खोजा जाए। मैं आपको कह सकता हूं, सभापति बनने के बाद देश भर से, हर वर्ग से, बालक से लेकर विद्यार्थी से लेकर, जो मेरे को बताया गया है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या यही कल्पना थी हमारी? इसका समाधान आपको ढूंढना होगा। हमारे पास एक ही विकल्प है, हम समाधान ढूंढें, अन्य कोई विकल्प नहीं है। Be in no doubt, the anguish and disappointment of the people at lack of decorum, discipline in parliament and legislatures is very severe. There is continual diminishing of respect we have in society. Friends, presiding officers, there cannot be a more grave situation and urgency to find a solution. Leaders of the House and leaders of the opposition, they know with their eyes to the ground, their ears listening to everything, how alarming the scenario is. How can representatives, MPs, MLAs, MLCs, they take oath of constitution, they swear by constitution, they swear by law, and they throw decorum to winds? Your role in containing and curbing downslide is all important. You will have to rise to a level by counseling, by educating, and by employing the rules to ensure that we get over this menace, this pernicious disease which is eating into our societal growth and democracy. ये समस्या प्रिय है, गले नहीं उतरता। कानून और संविधान की शपथ लेने वाले खुलेआम सदन के अंदर, इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो लोग निर्वाचित कर हमें भेजते हैं, जिनकी उम्मीद है, जो सोचते हैं आप समस्याओं का हल निकालेंगे, आप उनको रास्ता दिखाएंगे, उस मंदिर को हमने क्या कर दिया है? We cannot progress unless we diagnose the disease. Disease is diagnosed, समझ में नहीं आता, हम उसका समाधान क्यों नहीं दे रहे? राजनीति से ऊपर उठकर, देश भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान के एसेंस को दृष्टिगत करते हुए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, हमें सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। Can disruptions and disregard of rules in parliament and legislature राजनीतिक हथियार हो सकता है? Can it be a political strategy that we will come to the well, we will disrupt the house, we will not follow the rules? इन व्यवधानों और नियमों के उल्लंघन को एक राजनीतिक हथियार यदि अगर बनने देंगे, तो the sanctity of these temples of democracy will be outraged.
हम सबको पता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कहने में कसर नहीं रखते हैं। हम हास्यास्पद स्थिति को सामना करते हैं। कितनी व्यापक व्यवस्था के पश्चात इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है कि हम सदन में पहुंचे, और फिर नतीजा क्या है आपके लिए सोचने का बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन थे, करीब 3 साल तक मिले। उन्होंने बहुत डिफिकल्ट मुद्दों को एड्रेस किया, कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज। 2600 से ज्यादा अमेंडमेंट्स आए। क्या आपको कभी लगा कि उन्होंने डिसरप्शन किया उसका? क्या कभी लगा 1 सेकंड का भी समय नष्ट किया? क्या कभी लगा कि वेल में आए? जब इतने महान महापुरुषों ने इतनी कड़ी मेहनत के पश्चात इतनी विषम परिस्थितियों में हमको एक ऐसा शानदार संविधान दिया है, जिसके बनाने की जो प्रक्रिया थी, क्या हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट। और हम कर क्या रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं, पर डायलॉग नहीं कर रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पीठासीन अधिकारियों का मन बिल्कुल ठीक है, वो बेबस भी हो जाते हैं। इसमें ज्यादा उत्तरदायित्व है सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं का है। मैं मानकर चलता हूं कि आपके मंथन के पश्चात उनको भी एक बहुत सार्थक संदेश जाएगा। संविधान सभा ने हमें एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। विचार विमर्श में सौहार्द कहां गया? गायब है। भाषा में शिष्टता, विचारों में निष्ठा। जब इतने विद्वान लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें अनुकरण करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विधानसभा के सदस्यों की टैलेंट, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस किसी से कम नहीं है। दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी कमिटेड, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। मौका मिलता है तो ऐसा योगदान करते हैं कि दुनिया कायल है। बट अ सिंगल रिमोट कंट्रोल, दे आर इन द वेल। अ सिंगल रिमोट कंट्रोल, वी डिस्टर्ब द हाउस। सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दल ठीक है, भारत का सोच रखना पड़ेगा। वी विल हैव टू कीप नेशन फर्स्ट। टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। और इस मामले में जो अंतिम भाषण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उसके एक अंश को मैं आप बताऊंगा। यह उनका आखिरी भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सब कुछ होने के बाद ही रिफ्लेक्टेड, और आज के दिन बहुत प्रासंगिक है, हमें चेताना वाला है। हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड, बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी बैड लॉट। अब जब हमारे लोग दुनिया के अंदर छाप छोड़ रहे हैं, दुनिया के कॉरपोरेट्स में 10 कॉरपोरेट्स के अंदर अधिकांश में हमारे लोगों का योगदान है, ऐसी परिस्थिति में व्हाई शुड वी बी द बैड लॉट? डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, जो हमें चेताया, लेट अस थिंक अबाउट इट। आई एम श्योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स will bestow full attention
and take lead. जैसे क्रिकेट में कहते हैं, play on the front foot with a straight bat. The temples of democracy, they should become centers of excellence. Decorum, sublimity. Members of parliament must exemplify by their conduct virtuosity, sublimity, worth emulating. मित्रों, दूसरे मुद्दे पर जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो चुनौतीपूर्ण भी है, सामयिक भी है और उस पर मेरे पहले सभी वक्ताओं ने अपने हिसाब से कहा भी है। कुछ ने सीधी बात कही है, some have played protecting their wicket, पर यह मुद्दा ऐसा है, we can't have ostrich like stance. ओस्ट्रिच जैसे व्यवहार करती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह मुद्दा हमारे सामने है, जनता के सामने है, देश के सामने है, और वो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, और ये आपका विषय भी है। आई ग्रेटली अप्रिशिएट ओम बिरला जी एंड डॉक्टर सीपी जोशी कि उन्होंने मंथन चिंतन के लिए, डेलिब्रेशन के लिए इस विषय को रखा, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट अनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय के ऊपर संविधान का निर्माण होते समय क्या कहा? आई विल इन्वाइट योर अटेंशन। आई कोट, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड, आई एम कोटिंग डॉक्टर अंबेडकर, the constitution can only provide the organs of the state such as legislature, the executive and the judiciary, वो प्रोवाइड हो गए हैं, हमारे संविधान में है। द ग्रेट मैन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर सेज, आई कोट, द फैक्टर्स ऑन विच द वर्किंग ऑफ दोज ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट डिपेंड्स ऑन द पीपल and political parties. Democracy blossoms, democracy survives when legislature, the executive and the judiciary, they act in togetherness, they act in tandem so that aspirations of the people are realized. मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट स्क्रिप्ट इन लेजिस्लेचर अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट। उसी भावना में कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट। इट इज एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स। अब आज के हालात क्या हैं? वन अपमैनशिप, public posting from judicial platforms, ये ठीक नहीं है। These institutions must know how to conduct themselves. There can be interaction, there can be deliberations, but using these platforms for public consumption, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मैसेज दो, फ्रेंड्स, आई हैव डिक्लाइंड टू एंटरटेन द अटॉर्नी जनरल ऑन दिस पॉइंट। आई कैन नॉट बी पार्टी टू इमेस्कुलेट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड आई हैव बीन सोल्जर ऑफ जुडिशियरी। I have highest respect for judiciary. I have been part of it by training, by profession, and I have to respect it by the position I hold. Through this august platform, I will appeal to them. We all have to confine to a deep sense of propriety, self-respect, and commitment to the Constitution.
dialogue through public platforms is not a wholesome mechanism of communication. ऐसी परिस्थिति के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, a president of the country for 10 years and chairman of the Constituent Assembly, a celebrated figure, what he said. And that is caution. उन्होंने जो कहा वो एक चेतावनी थी, हमें आगाह किया था. I quote, if the people who are elected and capable and men of character, they would be able to make best even of a defective constitution. If they are lacking in these, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. मेरे सामने, आप सबके सामने चिंतन है और चिंता का विषय है कि जो लोग हैं वो प्रतिभाशाली हैं. विधायिका में और संसद में जो भी बैठता है, आप उनके प्रोफाइल को एग्जामिन करेंगे, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी. बड़े विद्वान हैं, हर फील्ड में, किसी न किसी फील्ड में उनकी भारी योग्यता है. उसके बावजूद हम संविधान को ऐसा क्यों कर सकते हैं? संविधान नामक मशीन जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लाइफलेस है, लेट अस मेक इट फंक्शनल. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर, जिस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊंगा जो आपका विषय है, बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, sovereignty of the people, sovereignty of the parliament. Executive thrives on sovereignty of the parliament. Legislatures and parliament decide who will be chief minister, who will be prime minister. The ultimate power is with the legislature, and legislature also decides who will be there in other institutions. In such a situation, all constitutional institutions, the legislature, the executive, the parliament, are required to be within their limits. One must not make incursion in the domain of the other. और जो incursion subtle होता है, उतना ही खतरनाक होता है. You are very illustrious people. क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? 1973 के अंदर एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई. 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं. विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस. दिस हाउस मस्ट डिलिब्रेट. कैन दिस बी डन? कैन पार्लियामेंट बी अलाउड that its verdict will be subject to any other authority? When I assumed the office of chairman Rajya Sabha, in my maiden address मैंने कहा, and I am not in doubt about it, ये नहीं हो सकता. न तो एग्जीक्यूटिव कानून को देख सकती, it has to follow it, और न जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती. यदि अगर संसद के बनाए हुए कानून तो किसी भी आधार पर कोई भी संस्था अमान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए, बल्कि कहना मुश्किल होगा, आर वी अ डेमोक्रेटिक नेशन? 2015 16 अक्टूबर का दिन लोकसभा और राज्यसभा ने एक कानून पारित किया जिसको आम भाषा में हम नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का कानून कहते हैं. लोकसभा में सर्वसम्मति से वो कानून पारित हुआ.
सर्वसम्मति से। राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, पर एक अब्सटेंशन था, लोकसभा में कोई अब्सटेंशन नहीं था। संविधान की आवश्यकता थी कि मोर देन 50% लेजिस्लेचर पास करें। राजस्थान लेजिस्लेचर वॉज द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू रेटिफाई इट। ऐसे कानून को 16 अक्टूबर 2015 को 4:1 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। दिस इज नॉट अ चैलेंज टू जुडिशरी, दिस इज बिलीविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज बिलीविंग इन डेमोक्रेसी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पर इसके बाद दूसरी जो समस्या है वो कार्यपालिका के लिए है। पार्लियामेंट ने कानून दिया, 16 असेंबलीज ने उसको रेटिफाई किया, महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत उस पर दस्तखत किए, और उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। कार्यपालिका के सामने दो मुद्दे, संसद द्वारा निर्मित कानून और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ कैसे झुक सकते हैं? हाउ कैन पार्लियामेंट सोवरेनिटी बी कंप्रोमाइज्ड? यह मुद्दा आपके लिए है। किसी भी परिस्थिति में जो लोग यहां बैठे पीठासीन अधिकारी, we can't be complainants. We have to serve this nation. We can't be in confrontation. We have to be in coordination. We have to be in collaboration. And I'm sure everyone will realize there must be a method to find way out. जनता ने आप पर बहुत बड़ा विश्वास किया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमने आपको यह अधिकार दिया है कि आप संविधान को बचाओ, हमारी सेवा करो और डेमोक्रेसी को फूले और फले ये करो। यू हैव नो चॉइस बट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट पार्लियामेंट्री ऑटोनॉमी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, राइट्स ऑफ द पीपल। बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी मिली है। लेट अस नॉट फ्लाउंडर इट। उसका एक ही रास्ता है, डायलॉग एंड लेजिस्लेचर से बेटर कोई संस्था नहीं है जो एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में कॉन्जिनियलिटी लाए, डेकोरस बिहेवियर लाए, संवाद स्थापित करे, रास्ता निकाले। फ्रेंड्स, in my valedictory address at the 250th session of Rajya Sabha, I had said one thing. I am quoting. This theatre of democracy, that is Rajya Sabha, is under the gaze of over 1 billion people in the country, as also those beyond. हमें कौन देख रहे हैं? 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, हमारा आकलन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस कालखंड के अंदर हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, जिन प्रतिनिधियों ने आस्था व्यक्त की है, उनका आचरण क्या है, अनुशासन क्या है, वो क्या कर रहे हैं। दे चेरिश होप एंड एक्सपेक्ट। क्या सोचते हैं कि ये लोग हमारा क्या करेंगे? दे विल फ्रक्टिफाई आवर ड्रीम्स, दे विल रियलाइज आवर एस्पिरेशंस। मित्रों, जब मैं ऐसा कह रहा था तो मेरे सामने डॉक्टर अम्बेडकर का एक कथन था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर अम्बेडकर का, आई कोट, अनलेस वी इन पार्लियामेंट, विच मीन्स लेजिस्लेचर, realize our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare of the people and good of the people, I have not the slightest doubt in my mind that this parliament will be treated by public outside with utter contempt, unquote. उन्होंने तो अटर कंटेम्प्ट कहा था। आज के दिन जाकर एनालिसिस कराइए, घर से शुरुआत कीजिए, वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, लाइव कवरेज के बारे में क्या सोचते हैं।
जब वो देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों का ये आचरण है और कानून निर्माण के समय अपनी योग्यता का परिचय नहीं देते हैं, ये सही वक्त है। 2047 में भारत 100 साल पूरे करेगा इंडिपेंडेंस का, उसकी नींव अपने को रखनी है, बेहिचक रखनी है। और इस सब को ठीक करने के लिए कितने कम लोगों का योगदान है। सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, पार्टीगण के नेता और जनप्रतिनिधि, 136 करोड़ जनता के भाग्य का विधाता बनने के लिए उनको सिर्फ एक सोच चाहिए और उस सोच को निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से। Friends, I have no doubt the task before you is as critical, as serious as in some sense was before the Constituent Assembly. I am sure deliberations and conclusions in the conference will be significant, far-reaching, milestone, and they will strengthen and enhance confidence of the people in Parliament legislature. I wish the conference a great success. Thank you. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे।